Okay. Fabulous. Okay, so welcome everybody. And thank you so much for being here and diving straight into the topic, which is doubt. Every single day about something or the other, we sit in doubt. We simply don't know whether to choose one or to choose the second option in case options are available. Or even otherwise, we look at a person in front of us and we are filled with doubt. If there's a demand that the person in front of us is making, we keep sitting in doubt to see whether the person is right or not, whether you should trust that person or not, whether you should trust whatever they are suggesting or not, whether it will work out for you or not. And with all of these choices that we have in hand, we become filled with doubt, whether to do this or to do that. When it comes to marriage, whether to choose this person or to choose that person, we are filled with doubt. Even when we are dating somebody, even when we are going out with somebody, we are constantly filled with doubt just about whether he's the right person for us or not, whether we should keep moving forward in this relationship or not. And so we keep sitting in doubt all the time. So now when we look at the frequency of doubt, just being able to look at the frequency and to be able to say what brings us into doubt in the first place, what frequency, underlying frequency is creating doubt in us. No matter which scenario you look at, if you are sitting in the frequency of doubt, if you think whether this is right or that is right, then there is that inherent fear underneath, which says if I do the wrong thing, I will have to suffer the consequences. So the fear of doing the wrong, the fear of picking the wrong, when we are given the choices, then every time we are looking at those choices and evaluating them from the conscious mind, And this is something that I used to do a lot in every scenario, no matter what happened. And this is the banker me, the most analytical me that there used to be. No matter what the problem at hand was, I would sit down and write all the pros and cons and then try and evaluate from those pros and cons as to which is a better choice for me. You have to forgive me for doing all of that, because in those days I was not aware. I wasn't aware that no matter what I choose, what I am going to get is going to be what I hold in my frequencies. Now I know that, but then I didn't. I thought I was choosing between job A and job B. If this is the job and then I have another offer in hand, what should I do? Should I choose this or should I choose that? Today I can say, well, it doesn't matter. But in those days, I would list out all the pros and cons of each job and say, what do I like about this and what do I like about that? And there's something over here, okay, this one has 40% weightage. I can cancel this out because this has 40% weightage. So I would actually sit and make all of these lists of pros and cons, and then from that place come to a decision. What would happen? A decision would get made. A decision would get made where I would have applied a lot of my mind. Does it bother me that I applied so much of mind and then the decision went wrong? Well, today it doesn't bother me because I know that it didn't go wrong. It just only showed me what is in my energies. But so many times you in your own life would have observed that you can put in a lot of analytics into something. You can analyze till you paralyze. It's a term, analyze till you paralyze, because you just keep analyzing, and then you are so filled with doubt because this also seems good, but that seems so good, but wait, that part about that seems so good. And we keep analyzing till we paralyze ourselves, and then we don't know what decision to take at all. And these are choices, and they will always keep creating more and more doubt frequencies into us. So what is it that we do? How do we make decisions? Well, now that we understand that no matter what you choose, it's going to be your energy that will play out. So simply not even going into the analysis, but seeing what it is that brings you more masti. And that will help you in making choices and clear some of the doubt. When you look at any of the options, and firstly, let us say that you can actually clearly see that, okay, this is going to bring me more masti, but that is going to pay me more money. Then I'm going to say to you
Just a second, somebody says. Oh, Ma says Hindi भी use कीजिए please. Okay, today we have a Hindi person, so we will use Hindi. Absolutely. तो अब हम, आपने बता दिया तो अब हम यूज कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हम फ्राइडेज को अब मोस्टली अंग्रेजी में ही जा चुके हैं। पर खैर, आप हैं, जरूर जरूर आई विल यूज दैट। तो हम जब भी बैठे होते हैं और कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो हमको इतने ही सारे कि इसमें ये बढ़िया है, उसमें वो बढ़िया है, हम क्या चूज करें, कैसे हम अपनी चॉइस करें। और या फिर अगर हम बैठे हुए हैं बद से बदतर की सिचुएशन में, तो भी हम चूज करते हैं कि अच्छा, इसमें कम से कम ये तो ठीक है, उसमें तो एकदम कुछ भी ठीक नहीं है, तो अब हमको क्या चूज करना चाहिए। एवरीवेयर वी गो नाउ इन कॉन्शियस अवेयरनेस, अब ये सिर्फ पता होते हुए कि नो मैटर व्हाट यू चूज, तुम चाहे कुछ भी चुनो, लेकिन मिलेगा तुम्हें वही जो तुम्हारी ऊर्जा में है। यू विल ओनली रिसीव दैट which is in your energy field. The outcomes are made not by your choices. No matter what choice you make, you are going to come to the place of whatever you have to receive, because that's decided by your energy field. हमारी ऊर्जा के घड़े में हमने जो कुछ भी भर रखा है, हमें वो मिलेगा और वो ही और ज्यादा मिलेगा। तो जब चॉइसेस के बारे में हमको यहाँ पे कुछ शक हो रहा हो कि ये करें या वो करें, संदेह है कि अरे कहीं गलत कुछ ना चुन लें, तो इसके अंदर क्या है, जहां पर भी हमको डाउट की फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो समझ ही जाना है कि उसके नीचे यही डर है। डर क्या है? डर ये है कि अगर हमने गलत चुन लिया तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, फिर उसकी सारी की सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमको भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन बाहर तो कोई कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं, और जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंस है वो तो सिर्फ हमारी ऊर्जा की है। वी एक्चुअली डोंट हैव एनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द आउटसाइड। द कॉन्सिक्वेंसेस आर फॉरएवर चेंजिंग as per your energy. There is nothing that is permanent. There is nothing that is permanent, not even any action that we take, not even any consequence that we suffer. So when we are suffering through a consequence, and we think, oh, I did this wrong. Oh, I made a mistake. I did this wrong. I was in doubt even while I was making even while I was making the decision, I was already in doubt. But now I know I made a mistake. And this is where doubt gets you to. Doubt, whatever choices you make in life, doubt is simply a frequency with the underlying of fear. डाउट के पीछे भी डर ही है, जैसा कि डर के पीछे है। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे डाउट के पीछे फर्क है कि जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं और धुंधला धुंधला सा है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे कुछ गलत होगा या नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग में एक कीड़ा जो होता है वो घूमता रहता है कि नहीं, ये पता नहीं कहीं गलत ना हो जाए, पता नहीं कहीं गलत ना हो जाए। और जबकि जो फियर है, वी क्लासिफाई मोर विद कि अच्छा, आज एग्जाम दिया तो एग्जाम को लेकर के फियर है, एग्जाम के अंदर फेल होंगे कि पास होंगे। शादी को लेकर के फियर है कि शादी, मेरे को तो शादी चलाने, मेरे को तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलती है, तो शादी भी कैसे चलेगी, क्योंकि मैंने तो देख लिया है कि मेरी शादियां नहीं चलती हैं, मेरे रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब हम फियर को लेके चलते हैं, तो हम आगे की तरफ देखते हुए बहुत स्पेसिफिक, वी कैन बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट वी आर फीलिंग फियर टुवर्ड्स। इट्स ऑलवेज अ टॉपिक दैट वी विल बी फीलिंग फियर टुवर्ड्स, बट डाउट इज समथिंग वेरी a little bit more general. However, at the end of it all, even the doubt underlying is fear itself, that if I pick the wrong thing, if I do the wrong thing, what should I do which will benefit me more? So over here, take a look. Now that we know how to work in the energies, firstly, take a look at what all attachments you have tied yourself to. When we are sitting in doubt whether I should do this, whether I should do that, something that always used to come up when we were younger and in the times when we had to decide on careers. Nowadays, there are 1,000 more career opportunities that are available. In my time, parents knew 3 opportunities. 3. You could be a doctor, you could be an engineer, you could be a chartered accountant.
And that was pretty much about it. I don't think that there was a fourth opportunity which existed, you know. And then when we were making career choices, then it used to be, oh, I love writing, you know, I'm very creative in writing, but writing doesn't pay. And that would be the basis of making the choice. And then you're sitting in doubt a few years from there, because, oh, did I pick the right thing? Did I pick the wrong thing? Because, you know, right now seems that people are making careers in singing. I wish I would have done that. I wish I didn't have to, you know, I wouldn't have chosen what I chose. So when you are sitting in doubt and you make a decision from the mind rather than the heart, you have chances, 50-50 chances of whether it's going to be something that will stick with you, or it'll be something that will give you into regret. But it's still 50-50. But however, this other way that we can make, you know, the doubt go away, whenever we are looking at doubt, in whatever scenario we are looking at doubt from, firstly, to recognize it's just a frequency. And underneath that doubt is fear. Even when you are doubting a person, or let us say now, you know, you have some money and you want to make investment choices, and now you are doubting your ability to make those financial decisions. You are making a you know, should I put my money here or should I put my money over there? The outcome that you are looking for is it should be favorable towards me. And what is favorable towards you? Well, this money of mine, if it's 1,000 rupees, it should make me 2,000 rupees. And that is what you define as favorable. That money making or not making is inconsequential. I have an old story from my life. In my life, most of the energies of abundance have always ruled. But there was a time when I was extremely worried. I was extremely worried for one person, and I didn't know what would happen. It was a little child, and I was very attached to that child, and I wouldn't know what will happen to the child, and the parents are not caring, and this is not happening, and nobody cares for her, or, you know, even if the parents are caring for her, they don't have the wherewithal. What will happen to her? So sitting in all of these frequencies of worry and anxiety, I thought that, okay, I will go and secure the future just a little bit. And so I went and I bought some gold in her name. I went and bought some gold in her name, and I kept it with me, thinking that, okay, whenever it is needed, then, you know, I will give in that gold, and then she can do something with it, whether use it for her education, use it for her marriage, but it belongs to her. Let's buy this gold. The gold was bought in complete frequencies of anxiety and worry. 15 years probably passed by, or maybe it was 10 or 15, I can't remember, but this journey of mine started. And then somebody else needed some money from me, and they said, you know, I've got guidance, you have to give me some money. And I didn't have any money at that time, but I thought about this piece of gold, and I said, okay, you know, I have this piece of gold, why don't you take this, and why don't you move forward? This is what the ask for the money is, then it'll be fulfilled with this piece of gold. By which time already my journey of awareness had started. And so I was able to see that, you know, she's that little girl is going to be who she wants to be. Her energies will take her wherever she wants to go. And I was no longer sitting in those frequencies of worry and anxiety. हम बात कर रहे हैं, अब मैं हिंदी में बताते हुए वो पुरानी कहानी को, कि एक बच्ची थी जिसकी मुझको बहुत ही चिंता थी, और वो बच्ची जो थी उसके साथ मेरे को बहुत अटैचमेंट था। उसका भविष्य कैसा होगा, उसके माँ बाप उसकी चिंता कैसे करेंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे, उसको क्या मिलेगा, उसके लिए लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, वगैरह वगैरह, सारा की सारा तामझाम मैंने अपने सिर के अंदर बुन रखा था। और उसके बाद जब हम थोड़े दिन हुए, और उसके बाद जब मैं बार बार उसके बारे में सोचती थी और मुझे चिंता होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ सोना इकट्ठा करके और रख लेती हूँ, और वो सोना शायद उसके कभी काम आएगा, जब उसको पैसों की जरूरत होगी, जब उसको पढ़ाई की जरूरत होगी, शादी की काम आ जाएगा उसके वो सोना। और वो सोना मैंने खरीद के रख लिया, क्योंकि सभी लोग तो यही कहते हैं ना कि सोना जो है वो हमेशा इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, उसको खरीदो तो हमेशा सोने का दाम तो ऊपर ही जाता है। श्योर इनफ मैंने भी यही देखा था, लेकिन मैंने पूरी की पूरी चिंता की फ्रीक्वेंसी में बैठ के और एकदम अशांति की फ्रीक्वेंसी में बैठ के और वो सोना मैंने खरीद लिया। उसके बाद साल बीत गए और मेरी ये वाली यात्रा शुरू हो गई, जिसके अंदर की मुझे दिख रहा था कि
तो सिर्फ वरी है, ये तो सिर्फ एंजाइटी है, इसको तो हम रिलीज कर सकते हैं। तो हमने वो सारा कुछ जो वरी हमने रख रखी थी उस छोटी बच्ची के नाम से, उस वरी को मैंने रिलीज कर दिया। खैर उसके बाद थोड़े दिन बीते और किसी और को पैसे की जरूरत हो, और उन्होंने बोले कि मेरे को गाइडेंस में आ रहा है कि आप मुझे पैसे दोगे तो आप मुझे पैसे दे दो। तो मेरे पास उस वक्त पे कोई पैसे थे नहीं, पर मेरे को ये याद आया कि अरे हाँ ये सोना पड़ा हुआ है। और अब तक क्योंकि मैं अवेयरनेस में आ चुकी थी और मुझे दिखता था कि काम तो अंदर है, तो खुद की मैंने सारी की सारी जो भी मेरे को चिंताएं थी वो मैंने सब रिलीज कर दी थी। और वो हमने उसको, लड़की को बोला कि ये कि जाओ, ये रहे तुम्हारे लिए सोने की ये छोटा सा टुकड़ा है, जाओ और देख लो, ये मैंने 10-15 साल पहले खरीदा था, 10 साल पहले, तो अब तक तो इसके दाम कितने ही बढ़ गए होंगे। वो गई और उसके बाद उन्होंने आके बताया कि 10 साल से जिस दाम पे आपने खरीदा था उससे 1 पैसा वो ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोने का दाम आज भी वहीं पे है जहां पर इतने दिन पहले था, 10 साल पहले था। ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि 10 साल तक सोने का दाम ना बढ़ा, लेकिन हुआ ऐसा। और मैं उसको सुन के एकदम हैरान रह गई। मैंने कहा ऐसा कैसे? तो फिर मैं गाइडेंस में बैठी, मैंने कहा कि ये क्या हुआ, मेरे तो हाथ में जो कुछ भी आता है तो वो हमेशा ही इतना ही अबंडेंस में चला जाता है। मेरे हाथ में जो भी पैसे आते हैं हर एक को फलते फूलते हैं। मेरे को तो बोला जाता है कि तुम अपने हाथ से पैसे दो और उसमें उसका कोई काम हो जाएगा। तो मैं इसी दुआ के साथ मन में, और कि भाई हाँ ठीक है ना, तुमको भी ये अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी मिल जाए जो मेरे पास है। तो जब यहाँ पे एकदम देखा गया कि ये तो कोई अबंडेंस कोई ही नहीं, यहाँ पे तो पहले भी हम उतने ही दाम पे बैठे हुए थे और अभी भी उतने ही दाम पे है, तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो हमने गाइडेंस में पूछा तो बोले याद करो। और अब तक 10 साल बीत चुके थे, तो मैं भूल भी चुकी थी कि भाई कहाँ पे क्यों ऐसे खरीदा था वगैरह वगैरह। पर मुझको गाइडेंस में मैंने जब पूछा कि ये ऐसे ऐसे कैसे हुआ, इसको तो इससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, मिले क्यों नहीं? बोले कि पहले तो याद करो कि तुमने ये वाला जो सोना खरीदा था वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में बैठ के खरीदा था। तुमने उसको इतने अभाव की, चिंता की फ्रीक्वेंसी में बैठ के खरीदा था, इतने डर तुमने उसके पीछे लगाए हुए थे कि हम तो उसको बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। तुमको वो ही मिला जितना तुमने डाला था, और अब जबकि तुम इसको किसी नए व्यक्ति को दो तो उसके ऊपर से अपनी सारी की सारी चिंताओं का बोझा हटा लो। So when I actually went and, so the story being that when I sent out that piece of gold for selling, it didn't sell for anything. The price for the gold hadn't gone up in 10 years. It's unheard of, but it hadn't gone up in 10 years. And I couldn't understand that why something that I have put my finger in, because normally I always see the frequency of abundance plays out like that. Only wherever from my hand the money goes to anyone, it tends to bring them into the frequency of abundance. It tends to release some of their fears because I'm giving it with so much love. So I was even asking, I said, why is this that this money hasn't grown? This person should have got a little bit more. And this money hadn't grown because I had brought that piece of gold home in my complete frequencies of energies of worry, fear, anxiety, etc., etc. Does it happen all the time? No, it doesn't happen all the time, but it's all about the frequency. My frequency is of abundance. So for me, the lack wouldn't grow. And that is how it is. Everybody, the whole world goes out and buys gold. The whole world goes and saves gold, but the whole world simply terms it as a profit and loss. That, okay, oh, we didn't make any profit on it, we didn't make any loss on it. They don't sit and ask in guidance कि इसमें कुछ सीखना है क्या मुझे। तो ये जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हमको हर चीज के अंदर से कि इसके अंदर से मुझे क्या देखना है, वो प्रश्न जो है वो हमेशा सामने आ जाता है। What am I to understand from this story? So when I asked, otherwise I could have just said, oh, gold prices didn't go up, gold prices didn't go down, whatever, and that's the story. And that would be just me looking at the gold prices from these outer two eyes. But when we are in awareness, we can make a shift, because we can actually, from every story that is playing out, we can change
because when we look inside, a new answer will come up for us. जब हम अंदर बैठ के और ये पूछते हैं कि मुझे इस कहानी से क्या सीखना है, तो हमारी एनर्जी के अंदर जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी चल रहा है, वो कहानियां निकल के और बाहर आती हैं। नहीं तो पूरी की पूरी दुनिया है ही, कोई तो सोना खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बैठ के ये थोड़ी सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि 10 साल तक गोल्ड का दाम ऊपर नहीं गया, या मुझे इसके लिए और पैसे नहीं मिले। अबंडेंस जो है, when we sit in abundance, then the outer abundance flows more to us. But anyways, this was the story just to say कि choices के अंदर भी जब हम, when we are out there and we are like कि अब क्या करना चाहिए, doubt की story कि when we make, when we want to make a decision और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो मेरा तो सिर्फ एक ही सुझाव रहता है, और हमेशा यही सुझाव रहता है कि भाई जब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अंदर की तरफ देख लो, क्योंकि कंफ्यूजन और डाउट ये दोनों भी तो मात्र फ्रीक्वेंसीज ही हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही है। आज आप अच्छे खासे उठे और आपका दिन एकदम मस्ती में जा रहा है, आप मस्ती की फ्रीक्वेंसी में बैठे हुए हैं, लेकिन कंफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली तो कोई भी चीज होगी, छोटी से छोटी चीज भी अगर होगी तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें भी डाउट आ जाएगा। छोटी से छोटी चीज में कंफ्यूजन कैसे? अरे खाने में क्या खाना है, खाने में आज इंडियन खाना है कि चाइनीज खाना है, उसको लेकर भी और आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा। क्यों? बिकॉज कंफ्यूजन इज जस्ट अ फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से ये जो डाउट है, कंफ्यूजन में तो ये होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। लेकिन जब कुछ समझ में भी ना आ रहा हो या डाउट हो कि इधर इसके साथ जाएं या उसके साथ जाएं, डिसीजन में क्या लें, तो सबसे पहले बैठ के और अपने सारे के सारे कि ये किया तो क्या, और ये नहीं किया तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या, खुद से ये सारे के सारे सवाल करें और खुद पूछें अपने आप को कि क्या आप इस तो क्या पे उबड़ खाबड़ हो रहे हैं। अगर आपने बोला कि नहीं, अगर मान लो कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप कौन सा करियर चूज करें, और आपने कि नहीं, इनको तो हमारी मम्मी कह रही हैं कि हमको ये वाला, हमें डॉक्टर बनना चाहिए, और हमारा दिल है कि हम डीजे बने, रेडियो जॉकी बने, तो हमारा तो दिल है रेडियो जॉकी बनने का और मम्मी कह रही है डॉक्टर बने, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे भयंकर कंफ्यूजन, क्योंकि मम्मी कह रही है कि भाई मैंने दुनिया देखी है और दुनिया देख के मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रेडियो जॉकी बनोगे भूखे मरोगे। तो ऐसा, तो अगर आपने यहाँ पे ये सुना तो आपको फिर भी कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है कि आपको रेडियो जॉकी बनना है, और मम्मी जो कि इतना दिमाग लगा के अपने इस नतीजे तक पहुंची हैं और वो कह रही हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले आप बैठ के और अपने दिमाग के अंदर ये दोनों की दोनों सिनेरियोस को पूरी तरीके से प्ले आउट कर जाएं। When you are in the confusion of making a decision, when you are sitting in doubt about anything outside of you, firstly look within and bring yourself to this question: what if this, and what if not this? No matter what the choice points are, what if this and what if not this? Play out all the consequences. Play out all the consequences that you think will happen. These are all the fears about the future that you are coming from or that you are holding within yourself. When we look at fear or doubt, to understand that fear is just a thought of a future possibility. It is not the reality. It might be in your mother's head, it might even be in your head that this is reality. But please look at the word fear. Please look at what is fear. Fear is simply a thought. It is a thought. जिस भी टॉपिक को ले लेंगे, फियर है अगर आपके पास, तो उस टॉपिक को लेके थॉट है, लेकिन वो जो थॉट है, वो जो फियर है, वो सिर्फ आपके दिमाग में एक विचार है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये आपके भविष्य को लेके आपने कुछ तो सोच लिया कि इतना ही बुरा होगा, ऐसा तो मेरा भविष्य है, इतना बुरा होगा। ये आपके सिर्फ दिमाग में है, अभी सिर्फ आपके जहन में है। इट इज ओनली अ थॉट राइट नाउ इन योर माइंड।
And yes, it will convert to reality at some point when you give focus to it. But right now, as you sit today and you are contemplating something about the future, please understand that if you feel fear towards your future, it is just in your head. It is nowhere else. It is simply that you are sitting in the frequency of fear. And from that place, you will find so much proof that will bring you more and more fear. When the mother says you be a doctor and you don't be a DJ, when you tune into that fear, you will be able to see 20 proofs, 20 proofs of people who became radio jockeys and are now hungry and don't have enough to eat. You will find that proof. आपको वो प्रूफ मिलेगा, आप जहां पे भी बैठेंगे और जिस नजर से देखेंगे, आपको वो प्रूफ जरूर मिलेगा कि आपने जो कुछ भी सोचा। मम्मी ने कहा कि डॉक्टर बनो, सही ही कहा, क्योंकि देखो ये भी भूखे मर रहे हैं, वो भी भूखे मर रहे हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, इनको भी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो आपने ऑलरेडी वहीं पे जाके और आपको प्रूफ मिलेगा जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी है। इफ यू आर सिटिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर, द यूनिवर्स विल गिव यू ऑल ऑफ दोज प्रूफ्स. If you are sitting in the frequency of doubt and trying to analyze, the universe will give you all of the proofs from the frequency where you are sitting in. So take a look at the frequency that you are sitting in. तुम कौन सी frequency में बैठे हुए हो, और दिख गया कि चलो अब मेरे को तो एकदम पूरा डाउट हो रहा है, उसके ऊपर तो ट्रस्ट भी नहीं आ रहा, उस आदमी ने मुझे ये बोला और मुझे उसकी बात नहीं सुननी है क्योंकि वो आदमी भरोसेमंद नहीं दिख रहा. I cannot trust that man is not looking trustworthy. I don't think I should trust him. What will happen if you trust him? What if this and what if that? What will happen if I trust him? No, I will lose all my money. I will lose my money. What will happen? Oh, I will be on the streets. Everybody will curse me. Everybody will hate me for doing this. I have responsibilities in my head. I cannot lose all my money. Has the loss of the money happened already? No. But what is the frequency over here at play? The frequency is of fear. The more you sit in this frequency, you become, this is the end truth of everything, you become what you put your focus on. You become that. So if you are going to be putting your focus constantly on fear frequency, then you will keep becoming more and more of the fear frequency. Then the outside universe will reflect more and more of the fear frequency. तो इसलिए जहां पर भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग है, और हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर अभी डुबकी लगाई हुई है, हम कहाँ पे बैठे हुए हैं. When we are able to see that the doubt is coming from these unexpressed fears, that is it. Every doubt point is from the mistrust of the universe. Every doubt point. There are so many people who are looking at, should I go with this doctor or should I go with that doctor? Even in terms of doctor, they're firstly going with the frequency of doubt. कि नहीं ये वाले डॉक्टर के पास जाए, नहीं उसने बोला तो वो ज्यादा अच्छा है, हम मेडिकल इलाज के लिए भी we must go to the other doctor. And I say, between those two doctors, how are you going to choose? You right now, you think you are analyzing. But underneath even this analysis is that, no, this one will be better and this one will not be so good. This one will be better, but this one will be not so good for me. I want the best. I want the best for myself, but the universe won't give it to me unless and until I am vigilant enough. अगर मैं ढंग से नहीं देखूंगी, अगर मैं उसको एकदम से ठोक पीट करके, ठोक बजा करके और चेक नहीं करूंगी, तो यूनिवर्स तो मेरे अगेंस्ट ही खेलेगा. तो एक छोटी सी चॉइस है, इस डॉक्टर के पास जाना है या उस डॉक्टर के पास जाना है. लेकिन उसको जब हम बैठ के देखते हैं कि उसके नीचे हमने डर कौन सा बिठा रखा है, और डर को देखने के लिए कि यहाँ पे नहीं गए तो क्या, और यहाँ पे चले गए तो क्या. आप सवाल वही पूछा, लेकिन उसके बाद उसके नीचे जाने से नहीं तो क्या, अरे नहीं फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये वाला डॉक्टर तो बहुत लंबा चौड़ा प्रिस्क्रिप्शन दे देगा और उसकी तो दवाइयां बहुत महंगी हैं, ये है वो है. जो कुछ भी आप कहानियां बनाएंगे, आप देखिएगा कि उनके नीचे की फ्रीक्वेंसी और नीचे और नीचे. आपने कौन कौन से
non-serving beliefs. वो beliefs, वो what is the word for, वो धारणाएं आपने बना रखी हैं जो कि आपको काम ही नहीं दे रही हैं। वो तो आपको सीमित कर रही हैं, आपको डर में बिठा रही हैं, आपको लिमिटेड कर रही हैं, वो आपको मस्ती में ला ही नहीं रही हैं। ये कौन कौन सी धारणाएं हैं? तो इस छोटे से क्वेश्चन से हम कौन सी धारणा पे पहुंचे? दैट द यूनिवर्स इज नॉट प्लेइंग इन माय फेवर, क्योंकि मुझे ही देखना पड़ेगा ये वाला डॉक्टर या वो वाला तो फिर उल्लू बना देगा। अरे चार, जैसे ही आप कहेंगे वो डॉक्टर उल्लू बना देगा, आपको 4 लोग मिल जाएंगे ये आपकी बात को सच बताने के लिए कि हाँ देखो, ये इसने तुमको उल्लू बनाया नहीं, या फिर तुम तो बच गई क्योंकि उसने तो हमको तो उल्लू बना दिया। पर हम बचे या नहीं बचे उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर जगह पे हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ चल रही है। तो अगर आप इतने डर की फ्रीक्वेंसी में बैठेंगे तो आज नहीं तो कल वो डर तो आपके सामने, आपका डर आपके सामने बन के आएगा ही। हमने अपनी आंखें पूरे टाइम दूसरों की तरफ कर रखी होती हैं, सारी आंखें दूसरों की तरफ। अरे ये बेटर है, वो कम बेटर है, अरे ये तो मैंने गलती कर दी कि इसके साथ चल दी, ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये करियर नहीं चूज करना चाहिए था, वो करियर चूज करना चाहिए था। जब चॉइस पॉइंट पे बैठे होते हैं, ये करें वो करें, कौन सा वाला जवाब चुने? मैं अपने मन के अंदर सिर्फ एक ही सवाल आजकल पूछती हूँ, कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर मस्ती ज्यादा आ रही है? मस्ती ज्यादा, हाँ ये वाला करने में ना मस्ती ज्यादा आ रही है, चलो ठीक है, पता तो चल गया कि ये वाला करने में मस्ती ज्यादा आ रही है। उसको छोड़ के और अब फिर मैं दूसरे वाले चॉइस पे जाती हूँ और पूछती हूँ कि अगर इसको कर लिया तो, अगर इसको कर लिया तो, सिर्फ मस्ती ज्यादा आ रही है, ठीक है, वो हमको डिसाइड हो गया कि चलो हम उसी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसके साथ जाएंगे और अभी तक हमने दूसरे वाले साइड्स के ऊपर से हमने अपने जो डर थे उनको देखा नहीं है, उनको निकाला नहीं है, तो हम कहीं पे भी जाएंगे वो डर तो हमारे साथ साथ चल के आएंगे। तो इस वजह से जब हम बैठे हों किसी भी डाउट के अंदर, तो पहले तो कि अच्छा किसी में ज्यादा मस्ती आ रही है कि नहीं आ रही है। मस्ती, सिर्फ मस्ती, पैसे ज्यादा, नाम ज्यादा, शोहरत ज्यादा, पहले हम सिर्फ मस्ती की बात करेंगे। तो मस्ती ज्यादा आ रही है, चलिए ये तो देख लिया कि इसमें ज्यादा मस्ती आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम अंदर की तरफ ही देखते हुए कि अच्छा जो नहीं करना चाह रहे हम, वो क्यों नहीं करना चाह रहे, उसके पीछे क्या रेजिस्टेंस है, क्या अड़चन है? क्योंकि हर रेजिस्टेंस के पीछे भी डर होता है। हर रेजिस्टेंस, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अरे ये हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। होगी चॉइस, हम करेंगे बाद में चूज, लेकिन फिर भी कितनी ही बार मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं कैसे मन में डिसीजन लेती हूँ, जब मैं पूरे तरीके से संभाव में आ जाती हूँ। अभी हम संभाव का तरीका ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पूरे तरीके से संभाव में आ जाती हूँ तो फिर मैं सिर्फ सिक्का उछाल देती हूँ और सिक्के पे जो भी आता है वो ही कर जाती हूँ। लेकिन उस सिक्के को उछालने से पहले अगर सिक्का उछाला और सिक्का हवा में है और आपका दिल कर रहा है कि बस हे भगवान सिक्का ये दिखा दे, सिक्का ये दिखा दे, तो इसका मतलब कि आपको अभी आउटकम से अटैचमेंट है। आपने नतीजे के ऊपर नजर रखी हुई है, और जहां पर हमने नतीजे के ऊपर नजर रखी नहीं वहां पर अटैचमेंट होगी, और वहां पे कई सारे डर इकट्ठे हो जाएंगे। हाय ये नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सारे के सारे डर इकट्ठे हो जाएंगे, एंड साथ में अगर वो अटैचमेंट टूटी तो फिर एक्सट्रीमली वी आर ओपनिंग आवरसेल्व्स टू रिसीविंग अ लॉट ऑफ हर्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अटैचमेंट का तो लिंक ही वहीं पे जाता है। सो हियर इट इज, व्हेन आई एम फर्स्ट सिटिंग with anything as a choice point, and when I'm sitting in the frequency of doubt, the work starts internally in the first set. And the first thing I will ask myself is, can I see myself having more joyful, being more joyful in one of those choices, being more joyful. And this is only about today, mind you. You might be joyful about something today, you might be joyful about something for the next 2 years, and then the frequency towards that might turn to something else. But we only speak from the moment of now. When we are working in the energies, we simply look at everything in the moment of now. In the moment of now, does something seem to me as more appealing than the other? So fine, this is more appealing, this looks like it'll give me a lot more fun.
Okay, then we put that thing to the side. And now we look at the other option that we rejected. And now to be able to look at why is it that we are rejecting that? What is the fear underneath that is making us reject that? What is our resistance towards that other choice? That, what is our tiniest of resistance? Now you look at all of that resistance and then you clear that as well. At that, and when I talk about clearing, it's only the same. You look at it, you come up with these parallel programs or these opposite programs to the ones that you are going to reveal to yourself. For sure, the program that you are going to reveal to yourself is the universe will not play play in my favor in the future. 90% of the times, this is the end result that you will come to. That will be your fear. नीचे सबसे नीचे की लेयर में कि नहीं नहीं मेरा तो ध्यान नहीं रखा जा रहा, ये सृष्टि जो है शायद मेरे पक्ष में ना खेले. तो अगर आप उस डर के साथ चल रहे हैं तो आप कहीं पे भी जाएं, but that is going to be the result again and again going to be shown to you. Your resistance is going to be shown to you. However, when we are looking at it from the energy perspective and we have looked at that, we create the opposite. How do we create the opposite? Come into the frequency of Meenal and the universe is playing in my favor. I am taken care of. The universe is playing in my favor. I am taken care of. At this point, you have actions and actions to take. You can take the action that was the first one that was going to bring you more masti. But at this point, you've actually come to the state of equanimity because you've cleared the fears from here. And you've looked at the masti over there. You've observed that, okay, this is going to bring me more masti. Okay. However, you've also looked at the fear over here. Over here, at this point, you can pick what brought you more masti, or you can go into the place of complete equanimity and say, whatever my coin will bring to me, that is the decision. Whatever my coin will bring to me. As the coin is being tossed and you decide on the heads or tails, take a very, very deep look as to whether you continue to be in equanimity or your needle has slightly shifted. There is no need, there is no urgency to be tossing that coin. The coin toss is simply to prove to yourself that you have come to a place of equanimity, that you are indeed sitting in equanimity, that you leave everything to something as trivial as a coin. एक सिक्का उछाल के जब हम अपना आगे का फ्यूचर डिसाइड करने को तैयार हो जाते हैं, इसका मतलब कि तो हम पूर्ण ही समर्पण में आ ही चुके हैं, क्योंकि वो जो सिक्का है वो जो भी करेगा ये भी सही और वो भी सही, वो मिनट मिनट में कुछ भी करेगा, लेके कहाँ पे जाएगा, हमें और अंदर की तरफ ही लेके जाएगा. हम अपनी ही एनर्जीज को और देख पाएंगे. वो एनर्जीज, all our energies are not available for our viewing today. Every single day, something or the other comes up. And that is why I remind each of you, the bath is every day. Because some layer, we are so vast, we have such a play of intricate energies, we are in roles, we are also, creating the universe for ourselves, but we are also in very important roles with, with our children, with our parents, we are in such important roles. So we cannot look at all the energy at one go, but the more we look at it, every moment to moment, we will be able to see, are we sitting and, sitting in equanimity and flowing with whatever it is, or are we sitting in resistance and we are, then when the resistance happens, then the fears will happen all over the place. I take a pause to read on some of the, what if the fear comes from a few past experiences? Oh, absolutely. Your fear will come from your past experiences. As I said, whatever frequency you are sitting in, that frequency will find a proof of the same. So if you're sitting in fear frequency, all your past experiences which are leading you to the same, to the same conclusions that you were, oh, this is very risky, this is very this is very that, all of them will come from that place. The proof will be given to you through your past experiences, through the neighbor's past experiences. The proof will be shown to you by the universe, because the universe will keep taking you to the frequency. I always say the universe always proves you right.
the universe will keep proving you right. So absolutely, to prove you right, you are sitting in the fear frequency saying, oh, this is like going to be a bad decision. This is a very bad decision. I think that, I have to take this decision, but it's very, very, and I'm not at all comfortable with it. And then what will happen? All of those thoughts will come to you where such decisions have gone wrong, where they've gone wrong. And all of those thoughts will come to you right now so that you can sit deeper in the fear frequency. And that's how the frequencies work. You will already be even more paralyzed from that frequency of fear. When you have released the fear and come to the fearless frequency, and I think somebody asked, what was the question? How to transform fear frequency in fearless frequency. I teach this as the most basic thing as the positivity process. There's a candle, you take the candle and then you simply firstly understand that whatever it is we are talking about, it is just a frequency. The fear is just a frequency, anger is just a frequency, sadness is just a frequency. And then you release into the candle. That is called the positivity process. And that is how you release the fear. When fear goes away, what remains? Fearless. Then sometimes I also teach, and any of you, if you are looking for these processes, please do a search on my channel and you will find this positivity process, which is just simply a candle. And it doesn't even have to be a physical candle. It can simply even be, a picture of a candle, because this is all about your awareness of what frequency you are sitting in. So each time you ask yourself the question, what am I feeling? From that question, you will know what frequency you are sitting in. If you are sitting in sadness, if you're sitting in fear, then you release to the candle. The second thing that you can do is come into my frequencies, be in the frequency of Meenal. And in Meenal's frequencies, there is a lot of fearlessness. There is a lot of fearlessness. So automatically, as you become more and more into the Meenal frequency, you will find that your patterns of your questions or these thoughts to yourself, which were otherwise in fear, now they will be a little bit more in fearlessness. So that is how you tune yourself into fearlessness. And then there is this one line that you remind yourself of. This line is, the universe is playing in my favor. I just talked about it. But when you are thinking to yourself in fear, the underlying thought is the universe won't play in my fear. And then when you say the universe is working in my favor, when you remind yourself of that the universe is working in my favor, that is the place where you will become fearless. The universe is working in your favor. Why do you have to fear anything at all? The universe will work in your favor. So coming from that place of faith can happen when you do the positivity process, when you do the Meenal frequency meditation, and also when you chant this mantra, the universe is playing in my favor. You can chant this mantra while being in Meenal frequency. It clicks on a lot faster. Okay. All right. So yeah, thank you. So somebody is also posted right now the positivity process. It's on YouTube. They've posted the link. So Asha, you can go take a look. It's called the positivity process. Wonderful. Okay. And also the frequency meditation. Yes. These are the things that I give as common subscription to everybody. This is like my Crosin. कुछ भी हुआ है Crosin खा लो. So like, कुछ भी हुआ है तो Meenal frequency meditation कर लो and positivity process कर लो, and everything, the more number of times you become aware and the more number of times you're able to do it, it'll keep taking you to answers. It'll take you to answers. So coming back to the frequency of doubt, does anybody have any questions about this doubt frequency as to how to make a decision? Again and again, just again capping कि हमने जो कुछ भी बात की तो उसको वापस से दोहराते हुए, क्योंकि डिसीजन, तुम सोचते हो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और डिसीजन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. यहाँ पे ये जो जजमेंट है कि सही है और गलत है, उसके नीचे ही फियर घुसा हुआ है, क्योंकि सही होगा तो खुद को फायदा होगा और गलत होगा तो खुद को बहुत नुकसान हो जाएगा. तो ये जो डर है, फायदे, मुनाफे, नुकसान वगैरह वगैरह का जो कुछ भी आपको डर है, वो डर है. That is only simply fear. And that fear has come to be released. That fear has come to be released when
डाउट इज द फ्रीक्वेंसी यू आर सिटिंग इन। तो पहले अंदर की तरफ देखो, ये डाउट आ ही क्यों रहा है। आराम से कुछ भी, ये कर लेते हैं, वो करना है वो कर लेते हैं, जो भी करना है कर लेते हैं, एंड यू विल फाइंड what is it that will happen। अगर आपने अपनी एनर्जीज में देख लिया, अगर आपने अपनी एनर्जीज में देख लिया, अटैचमेंट्स रिलीज कर दिए, जजमेंट्स रिलीज कर दिए, और उसके बाद आपने देख लिया कि अब आप इक्वानिमिटी में बैठे हुए हैं, तो होगा क्या, रास्ता बनता चलेगा, रास्ता बनता चलेगा, और आपको अपनी चॉइस आसानी से नजर आ जाएगी। कुछ भी चॉइस हो सकती है, पहली बात तो आउटर चॉइस क्या है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर फिर भी अगर आपने उसको क्लियर करते चले तो आराम से आपको रास्ता नजर आता चला जाएगा। मान लीजिए कि सब कुछ रास्ते के अंदर सब कुछ हाँ ही हाँ होता जा रहा है, तो फिर ठीक है, जहां पे आपको ज्यादा मस्ती आए वो कर लीजिए। अगर ये रास्ता भी पूरा अच्छे से खुल रहा है, वो रास्ता भी पूरा अच्छे से खुल रहा है, तो बस बैठ के और मस्ती के ऊपर ध्यान दीजिए और वो काम कर जाइए, क्योंकि मिलेगा। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। पैसे तो ना यूं हवा में बनते हैं, पैसे हवा में बनते हैं, और पैसे हर फ्रीक्वेंसी में बनते हैं। करोड़ों बन जाएंगे आपके चिंता की फ्रीक्वेंसी में बैठ बैठ के, फिर लेके क्या आएंगे, वही जहां से बने वही लेके आएंगे। मेरी जो गोल्ड की कहानी थी वो यही बताते हुए थी कि वो पड़ा रहा इतने दिनों तक क्योंकि उसको बढ़ना ही नहीं था, उस लैक को बढ़ना नहीं था, उसको तो घटना था, पर वो इसलिए क्योंकि वो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में बैठा हुआ था। लेकिन हम जब चिंता की ही फ्रीक्वेंसी में बैठ जाते हैं, डरों की ही फ्रीक्वेंसी में बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, हम बस उन्हीं उन्हीं को और बढ़ाते चले जाते हैं। इसके अंदर क्या पैसे बनेंगे, हो सकता है पैसे बन जाए, हो सकता है पैसे ना बने। पैसों की कमी और ना कमी का तो अबंडेंस से कोई सरोकार है ही नहीं। जो भरपूरता है वो हमको मन में हमको फील होती है, और ये इस लाइन से फील होती है कि मेरा तो ख्याल रखा जा रहा है। Abundance has nothing to do with money. Money is created in absolutely every frequency. You scramble, you struggle, you will make money. Whether you'll make 5 rupees, whether you'll make 40 rupees, whether you'll make 40,000 rupees, inconsequential. But money has nothing to do with the frequency that you are sitting in. So if you are, again and again, if you are sitting with a choice for something, some people choose, okay, I'm going to choose a groom for myself. Somebody who is much better off, is doing better for himself, has a stable whatever, stable job, and I'm going to choose somebody like that so that I can live more well off. Well, if you have to live more well off, guess what will happen? The money will come no matter who you marry, because you just have to live that abundant life. If you have to live not such an abundant life in terms of money, no matter, you can marry a billionaire, and then what will happen? Well, if you won't be enjoying that, even everybody else in the house might enjoy those billions, but you will find, your energies will find a way or another for you to not enjoy that. It might find you some shortage of time, because lack, whenever we are running after money, lack is the frequency. And then when we are making, sometimes so many people make choices from that frequency of lack, and then soon enough, sure enough, they will find that they are simply just sitting in more lack of something or the other, but they are sitting in more lack. हमको जब डिसीजन पॉइंट करना है किसी भी चीज में, अगर कंफ्यूजन हो ही रहा है, देन डाउट हो रहा है, ये सही रास्ता है कि नहीं, क्या करूं, ये करूं या नहीं करूं, जहां पर भी डाउट आ रहा है, बस अंदर की तरफ काम करके और अपनी नीडल को आपने मस्ती की तरफ वापस से लेके आना है. यू रिलीज द डाउट. डाउट इज सिंपली जस्ट अ फ्रीक्वेंसी. Any questions about doubt? Any doubts about doubt? Dealing with doubt. Doubts happen every single day. The self-doubt is one of the most easy things to do for ourselves. And the self-doubt also comes from a lot of fear. Comes from a lot of fear of not trusting the self. हम जब खुद पे भरोसा नहीं करते, हम जब खुद को प्रेम नहीं कर पाते, तो हम डाउट की फ्रीक्वेंसी में दोबारा दोबारा जाके बैठते हैं. आउटसाइड तो ये कहानियां बनती ही रहेंगी, लेकिन बार बार हमको लेके आएंगी डाउट की तरफ,
और वो डाउट जो है वो बाहर का नहीं, वो खुद का कि नहीं ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं इसके काबिल हूं या नहीं हूं. So we keep sitting in so many frequencies, and that doubt is all for the self. And so again, for that we have a very, very beautiful method, and which is to keep reminding yourself that I am awesome. There is no other place, there is no other mantra that works so much as this mantra, which is I am awesome. But there are so many people who also come to me and say, I can't say this mantra, it sounds like a lie to me. And I say to them, fine, keep speaking the lie till it becomes the truth. There are so many times that you have believed so many lies about yourself. You are not good enough, you are not this, you are not that. All of those are lies as well, but they were repeated and repeated, and now they have become the truth. And so simply, even this line, I am awesome, even if it feels like a lie, repeat it to yourself till it starts looking like the truth. It happens. This is how the mind plays. Wherever you put your focus on, you become. So you put your focus on, I'm not good enough, you become. If you put your focus on, I am awesome, you become. And that every lie is a truth at some point in time. The minute we change our focus, then that lie itself can become a truth for us. So keep doing this mantra till you completely believe in the mantra without judgment on yourself. The judgment will come. The judgment will come every single day. We are on earth, we are in the body, the judgment will come. The job is not to kill all the judgments, but actually to be able to judge ourselves in the most amazing way. And how to judge ourselves in the most amazing way? I am awesome. I am awesome. When you figure out that this is not, I am awesome at doing this, I am not awesome at doing this, this is not about the stories outside. This is simply that I am the source, I am the creator, I am the destroyer, and therefore I am awesome. I have all of these powers. I am this power of love, and therefore I am awesome. But this awesomeness is my property. Many people want to justify how they are awesome. They, I do this really well, and so I'm awesome. I sing very well, I play very well, blah, 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 and so I'm awesome. You have to do nothing. You have to be good at nothing, and yet you are still awesome. When you come from this place, you will find that more and more the self-doubt, that nagging self-doubt, am I good enough? Am I not? Should I be doing this? Will I be able to do this? All of these programs of self-doubt will fall. It's not necessary that you will be able to do everything. It's not necessary just because you say I'm awesome, tomorrow you'll be put into a rocket and you'll be launched into a spaceship and you can do all of that. It's not necessary. The doing is not at all necessary, but just for you to know that you are the source and to operate from that place. And then what will happen from the outside? The outside will keep giving you feedback. The universe always gives us feedback. So the universe will keep giving us feedback of how awesome you are. जब जब तुमको सेल्फ डाउट हो कि ये मैंने सही किया या गलत किया, ये मैं कैसे करूंगी, मैं कर भी पाऊंगी ना नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा या नहीं होगा, आप जिस भी दुविधा में बैठे हुए हैं, जहां पे भी आपको डाउट हो रहा है अपने ऊपर, तो वहां पर सबसे पहले खुद से प्रेम व्यक्त करते हुए और ये खुद को बोलते हुए कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ और मैं सर्वोपरि, मैं आई एम ऑसम, ये वाला जो मंत्र है, ये सिर्फ आपके करने और ना करने पे कि नहीं ये तो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूं पर ये मुझे आता नहीं है इसलिए इसमें मैं थोड़ा कम ऑसम हूं। आप कुछ करें या ना करें, ये तो आप ही का, ये आपके कैरेक्टर का एक पार्ट है कि आप तो ऑसम ही हैं। और ये ऑसमनेस क्यों है? क्योंकि आप ही तो शिव हैं जो कि अपने सृष्टि करता है, पूरी की पूरी सृष्टि आप ही की ऊर्जा से बनी हुई है, इसलिए हम अपने आप को ऑसम करार करते हैं। आज हमने लंच अच्छा बनाया इसलिए मैं ऑसम हूं, और आज डिनर बहुत ही घटिया बन गया इसलिए मैं ऑसम नहीं हूं। इसका कोई भी सरोकार नहीं है आपसे खुद से ये जानने के लिए कि आप कौन हैं। आप तो शिव हैं। शिव किसी की गर्दन काट दें तो भी शिव तो शिव है, एंड शिव इज ऑसम, सो यू आर ऑसम। सो ऐसा सेल्फ डाउट का जब भी हमको
महसूस हो कि हम सेल्फ डाउट बहुत करते हैं और खुद पे संदेह करते हैं और खुद की काबिलियत पे शक करते हैं, हमें कुछ करना जरूरी नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। हम जो है हर बार जब हम डाउट में होते हैं, और स्पेशली जब खुद के प्रति डाउट है, जब बाहर के प्रति डाउट है, तो हम कुछ करके कि हाँ, कैन आई प्रूव दिस टू माई सेल्फ, और हम खुद को ही ये प्रूव करने में भिड़ जाते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं इतना काबिल हूँ। वो जब आप खुद को प्रूव करते हैं, आप सोचते हैं कि आप दुनिया की नजरों में कुछ प्रूव करके आप कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज ऑफ सेल्फ डाउट। किसी और को कुछ दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, और ये क्योंकि नहीं, उनको मेरे ऊपर डाउट है, वो सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने तो बीड़ा उठा लिया, अब तो मुझे करना ही है। ये जो आपने स्ट्रगल उठाया अपने साथ, उसको पहले तो देखें कि ये आपने क्यों अपने माथे के ऊपर ये प्रूव करने का इतना बड़ा भार, कि कुछ भी अपने बारे में, किसी और के बारे में प्रूव करने का भार आपने कहाँ से उठाया। खुद को खुद से प्रेम नहीं है, बस इसलिए उठाया। खुद को, सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है आप किसको क्या दिखाएंगे? आपके माँ बाप को भी आप कुछ नहीं दिखा सकते। वो तो वो ही देखेंगे जो उनको देखना है, जो उनको अपने एक्सपीरियंसेस चाहिए वो देखेंगे। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ खुद के लिए प्रेम कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, उनको तो जो मिलना है वो मिल जाएगा। हो सकता है कि आप माध्यम बन गए हों, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रहा हूं, ना, आप माध्यम हैं, उनको जो मिलना है वो मिल रहा है। आप अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, किसी के लिए भी अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी को ये करके दिखाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ खुद को खुद से प्रेम करना है और कुछ करके दिखाना ही नहीं है। जब खुद से खुद को प्रेम होता है, तो ये सारे की सारे ये जो आउटर पैरामीटर्स हैं, ये जो हमने अपने लिए मापदंड बना रखे हैं कि ये होना जरूरी है, मेरी वैल्यू के लिए ये होना जरूरी है, तो उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ खुद के ऊपर शक है। इट इज सेल्फ डाउट, और जहां पे सेल्फ डाउट है वहां उसका इलाज सिर्फ खुद से प्रेम है। तो खुद से प्रेम तो हमेशा आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। आई थिंक आई कवर्ड ये वाला पार्ट रह गया था सेल्फ डाउट का, और कितना ही बड़ा पार्ट है सेल्फ डाउट का, क्योंकि ये हम रोजाना अपने आप से ही जूझते हैं। वी आर ऑलवेज फाइटिंग विद आवर ओन सेल्व्स। The most proving that we want is for our own selves, because we don't value ourselves as is. And then ये इतना कर लिया, आप करोड़ों भी कमा जाएंगे, फिर भी मन में थोड़ा सा कि नहीं, सब नहीं माने कि मैं कितना अच्छा हूं, तो अब मुझे थोड़ा कुछ और करना चाहिए। अब ये इतना कमा लिया, अब हो सकता है थोड़ा दान दे दूं तो थोड़े लोग और ज्यादा मेरे बारे में मान जाएं। फिर थोड़ा सा दान दे देते हैं, फिर भी 4 लोग नहीं मानते आपको कुछ अच्छा, तो फिर आपको उनको भी प्रूव करना है। किसी को प्रूव करना है, अगर आपके मन के अंदर यही विचार है कि आप किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, तो देख जाइए, खुद से ही प्रेम नहीं है, बस खुद से खुद को प्रेम देना है। जहां पर कोई आपको प्रेम करता है और सचमुच का प्रेम करता है, बिना किसी शर्त का प्रेम करता है, तो वहां पे किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं। ओके, तो हमको प्रेम भी जो है ना, खुद से ही, याद रखे, खुद से ही करना है। पहले खुद से प्रेम करना है, बाहर वालों को अपने आप से मिल जाएगा। अगर हम खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो देख जाइए खुद के ऊपर जो कुछ भी आप सेल्फ डाउट पे बैठे हुए हैं, वो देख जाइए। एंड देन द मंत्रा, आई एम ऑसम। ओके एवरीबॉडी, ऑल राइट, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। एकदम शांत मन करते हुए, और सबसे पहले हम, जैसा कि हमने पिछली बार मेडिटेशन में किया था, हम पहले खुद की तरफ जाएंगे। खुद की तरफ, खुद की तरफ जाने के लिए आंख बंद, एक लंबी गहरी सांस, टेक अ डीप ब्रेथ इन, क्लोज योर आईज एंड सिंपली बी एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ब्रेथ। अपनी सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करें।
और कुछ नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई विचार नहीं। कोई विचार इस वक्त अगर आ भी जाए तो 2 मिनट उसको शांत रहने को बोले। मेरी आवाज शब्दों को सुने, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी आवाज ब्रेथ की उसको सुने। आपकी श्वास की जो आवाज है उसको सुने। Focusing on the breath, and now taking your focus towards your palms. And you can open your palms and put them out in front of you. अपने हाथों को, हथेलियों को खोल के आप अपने सामने रख सकते हैं। और अब अपना पूरा की पूरा ध्यान अपनी हथेलियों तक, अपने हाथों तक लेके जाते हो, और कुछ नहीं। वो हाथ आपको कैसे फील कर रहे हैं? भारी हैं, हल्के हैं, ठंडे हैं, गरम हैं? अपने हाथों को पूरा की पूरा फोकस में लाते हुए आंखें अभी बंद। और अब देखिए, क्या आपको हाथों में कुछ महसूस हो रहा है? ऊर्जा, थोड़ी कंपन। Simply putting all your focus on the palms, spreading them out, and observing those palms. Are they heavy? Are they cold? Are they light? Are they fidgeting? Are they silent? And now, as you take all your focus towards the palms, can you feel some slight tingling, some energy? Any feeling at all? Are you able to sense that vibration, that slight vibration, that slight tingling? Are you able to sense any energy at all? And now, spread the palms in front of you. अपनी हथेलियां अपने आगे करें और खुद को कभी इस हथेली पे बैठ के देखें और कभी उस हथेली पे बैठ के सोचें जैसे कि आप एक बहुत ही हल्का फुल्का पंख है, और वो पंख कभी इस हथेली पे है और कभी इस हथेली। उस पंख को अपनी हथेलियों पे महसूस करें। वो हल्का सा पंख है, कुछ ज्यादा नहीं। कभी वो इधर और कभी वो उधर। आपका पूरा की पूरा ध्यान अपनी एनर्जी पे, जो कि आपको महसूस भी हो रही है आपके हाथों में, और वो पंख जो कि आप ही हैं, और अपनी ही हथेली पर कभी उधर और कभी उधर, एकदम हल्का फुल्का। वो किसी भी हथेली पे जाके बैठे, वो जो पंख है वो हल्का फुल्का ही रहता है। Think of yourself as a light feather, a very light feather. And now extend your hands out in front of you, your palms in front of you, and almost imagine that you, as that light feather, are simply moving from one palm to another palm, just one palm to another palm. That feather is light, no matter where it sits, whether on your left or on your right. The feather is just light. The feather is just light, no matter what it does. This is you, and these two, the left and right palms, are your choices. You can be in any choice point at any time. But if you are the feather, you can be light
whether you sit here or you sit there. The focus on being a light feather. Energy दोनों हाथों में है. The energy is in both the palms, and it's your energy. And no matter where the feather sits, whether on the left or on the right, it's going to experience the same energy because the feather is you, but the palms are also you, and the energy is also you. आपने अपने आप को देखा, आप वो पंख हैं जो कभी लेफ्ट पे जाके बैठता है और कभी राइट पे जाके बैठता है. और देखिए, वो पंख जो है वो हल्का ही रहता है, भले ही वो किसी भी हाथ पे क्यों ना बैठा. और यही है आप. ये जो लेफ्ट हैंड की चॉइस है और जो राइट हैंड की चॉइस है, वो तो सिर्फ चॉइस है. और वो जो पंख है वो दोनों तरफ बैठा हुआ हल्का है. ये एनर्जी भी आपकी है, ये हाथ भी आपके हैं, लेकिन वो जो पंख है जिसको इस हाथ बैठना है या उस हाथ बैठना है, वो चॉइसेस दोनों की दोनों है. और इसमें संदेह कैसा, सब कुछ आप ही की ऊर्जा तो है. Where is the doubt in any of the decisions that you take? Because everything is simply your energy. Where is the doubt? And no matter what decision you take, the receiving is going to be either left or right, both working with your energy. The feather can be light, the decisions not weighing on the feather. कोई भी कहीं पे भी कैसा भी अगर आप निर्णय लें, ए करें या बी करें, कुछ भी करें, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को देखते रहें, क्योंकि सब कुछ आप ही की तो ऊर्जा से बन रहा है. तो इसमें संदेह ही किस बात का. पूरी की पूरी सृष्टि आप ही के पक्ष में खेल रही है. आपको जहां जाना है, जो करना है, जैसे करना है, मस्ती में करें, मस्ती में करें. With whatever decisions you have in your life right now, whatever you are sitting with, simply bring yourself to this place of left or right, you being the feather. What brings you to more masti? Be aware of what brings you to more masti. But what weighs you down is the fear, because you haven't processed the fear of what if. So process the fear. What if this and what if that? The universe is playing in my favor. What if this? What if that? I am taken care of. I am taken care of. कहीं पे भी बैठे, कुछ भी करें, ये समझते हुए जो भी मिलेगा अपनी ही ऊर्जा से मिलेगा. तो इसलिए अपनी ऊर्जा में तो मस्ती है, मस्ती रखिए. और यही मानते हुए और जानते हुए कि पूरी की पूरी सृष्टि मेरे ही पक्ष में काम कर रही है. कोई भी डिसीजन हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो ख्याल रखा जा रहा है. और उन सारे डरों को इसी वक्त में जाने देते हुए उड़न छू. Letting your fears disappear in this moment when you play in the frequency of masti, of abundance. Tomorrow might be another day. Tomorrow might be another decision. Be the feather, be the left or the right. Everything is playing in my favor. Whatever the decision be, I am taken care of. Be grounded in these frequencies and play in masti as much as you wish. Okay, everyone, lots and lots of love. Thank you so much. Enjoy, everyone.
Thank you.